Good evening, friends. Today we are for an introductory talk on cancer prevention, organized jointly by Inner Wheel Club of Nagpur and Omega Hospital. हमारे साथ संवाद करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर चैतन्य शेम्बेकर। चैतन्य, इनके नाम में ही चैतन्य यानी ऊर्जा है। ऐसे ऊर्जा से परिपूर्ण डॉक्टर चैतन्य हमें आज कैंसर पर मार्गदर्शन करेंगे। कैंसर का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, मगर क्या हम इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? इन सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए मैं निमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चैतन्य शेम्बेकर को। वैद्यकीय क्षेत्र में इन्हें 30 साल से भी प्रदीर्घ अनुभव है। ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं डॉक्टर शेम्बेकर के पास। ओवर टू डॉक्टर चैतन्य। वेलकम। Thank you, Supriya, and thank you so much for giving me this opportunity. It's a great opportunity, and actually, I was looking forward for this opportunity to interact with the members of your club, because you know what is important is the right information, and if you get right information, then I think that is the best thing, because nowadays there is no dearth of information, and with internet, availability of internet, you have so many things available on the click of your mouse, and then you get information which is good, information which is authentic. At the same time, you many times get information which is not authentic. Anybody can put anything on internet, and then you may get scared, or you may get misled by the information which is available on the net. So what is important is somebody who is working in that field, experienced in that field, should give you the right information. मी मराठी, हिंदी, इंग्रजी तिन्ही भाषांचा वापर करू की फक्त इंग्रजीत बोलू? हिंदी इंग्रजी। सुप्रिया, व्हॉट डू यू से? हिंदी इंग्रजी। हिंदी आणि इंग्रजी, ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. We start with today's topic, and that is कैंसर प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग. कैंसर का प्रिवेंशन कैसे करना है और स्क्रीनिंग भी कैसे करना है, ये दोनों चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ. I bring greetings from Omega Hospital, Nagpur, which is a gynec care center situated in Nagpur. We have a team of directors. We have with us Dr. Chaitanya Shembekar, who is director, along with me. Then Dr. Parul Saoji and Dr. Ashish Zararia. So I bring greetings from Omega Hospital. Along with that, I also bring greetings from Nagpur OBGYN Society, which is my parent society, and the Association of Maharashtra OBGYN Societies, where I am a chairperson of the Infertility Committee. The aim of today's meeting is, as I told you, not to create panic, but to create awareness, to give right information to all the members, and it is your duty to spread this information further to as many people as possible. कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो. तो इस तरीके से हमको ज्योत से ज्योत लगाना है और आगे बढ़ना है. मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ सुप्रिया जोशी का, जो कि हमारी फ्रेंड है. सुनील हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं. तो सुप्रिया ने मुझे ये यहाँ आपके साथ संवाद साधने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका और सुप्रिया का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ. Now, what is important is there is something which is not in your hands, something which you cannot change. And many times people say कि अरे परिस्थिति ऐसी है की मैं कुछ नाही कर सकता, सिच्युएशन ही ऐसी आहे की मैं कुछ नाही कर सकता. तर परिस्थिती म्हणजे काय? तर आपण निर्माण करू ती परिस्थिती. हमने जो निर्माण की है वो है सिचुएशन, और ये सिचुएशन हमारे ही कारण निर्माण हुई है. तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं बदल सकता हूँ उसे बदलने की मुझे शक्ति दे, जो मैं बदल सकता हूँ उसे बदलने की मुझे शक्ति दे, और जो मैं बदल नहीं सकता उसको सहन करने का सामर्थ्य मुझ में आना चाहिए. क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, और कुछ चीजें हैं जो हम खुद चेंज कर सकते हैं. विद दिस आई स्टार्ट
today's topic, and that is prevention and screening of cancer. Now, if you just look at the WHO figures, you will find that 1 in 6 deaths which are occurring all over the world are because of cancer. And around 10 million deaths in the year 2020 were because of the cancer. And the breast cancer is the most common cancer of all. There are many reasons why the cancer number is on so much on rise. People they blame it for genetics, some people they blame it for pollution, sometimes due to tobacco or obesity, or maybe consumption of alcohol and smoking, diet which is containing low fruits and low vegetable intake, and lack of physical activity. Uh, Along with that, there are many other reasons. Today, we are going to specially focus on three cancers: breast cancer, the uterine cancer, and the cervical cancer. So, I must tell you that the cervix, which is the opening of the uterus, the cancer of the cervix is mostly because of the virus, and the name of the virus is human papilloma virus. Now everyone knows COVID virus, everyone knows Omicron nowadays, but there is a virus which is there since last so many years, that is HPV virus, human papilloma virus, and especially in developing countries like India or poor countries like India, 30% of the cancers are because of the HPV infection. So this is about the figures or the statistics. बट हियर आई मस्ट टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, दैट जो हमारा आयुष्यमान बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा पुराने जमाने में 60 साल की उम्र ये नॉर्मल लॉन्जेविटी रहती थी, अभी वो 80 साल की हो गई है। तो उसकी वजह से हमको मरने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, और कोई ना कोई बहाना तो रहने वाला है जिससे हम लोग भगवान से प्यारे होने वाले हैं। तो वो जो बहाना है वो कैंसर का हो सकता है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ ना कुछ तो होना है। किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, किसी को कैंसर होने वाला है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है, किसी को पैरालिसिस होने वाला है, कुछ तो होना है। इसीलिए कैंसर का एक्चुअली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एज एंड लॉन्जेविटी, कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ते जा रहा है। अब एक्चुअली कैंसर यानी क्या, ये आप सबको मालूम है। हम लोग उसको कुछ लोग उसको ट्यूमर बोलते हैं, कोई उसको नियोप्लाज्म बोलता है, कोई इसको मैलिग्नेंसी बोलती है। इसमें एक्चुअली एबनॉर्मल टाइप के सेल्स जो है वो रैपिडली ग्रो होते हैं, और फिर वो आजू बाजू के सराउंडिंग एरियाज में स्प्रेड होने लगते हैं, और वो जब स्प्रेड होते हैं उसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं, और वो धीरे धीरे करके लीवर, लंग्स और अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड होते हैं, और फिर ये मेटास्टेसिस ही कॉज ऑफ डेथ हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रमाण है वो सबसे ज्यादा है, और बाकी के जो कैंसर है वो बाद में आते हैं। और एक चीज जो हमें आजकल दिखाई दे रही है वो ये है, जो कि सैड है, दैट्स अ सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट मेनी चिल्ड्रन आर गेटिंग कैंसर नाउअडेज। सो द कैंसर इन यंग एज इज आल्सो बिकमिंग अ रियल प्रॉब्लम। आई एम आईवीएफ स्पेशलिस्ट, और मेरे पास टेस्ट ट्यूब बेबी का मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास ऐसे काफी यंग लड़के और लड़कियां आते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए, जिनका कैंसर की वजह से रेडियोथेरेपी या इलाज चलते रहता है। उनके सीमेन, स्पर्म्स को और एग्स को हम लोग फ्रीज करके रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस आजकल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है, छोटे बच्चों में और यंग जनरेशन में भी कैंसर का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इंडिया में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, ये इसका इंसिडेंस काफी ज्यादा है। तो ब्रेस्ट इज नंबर 1 एंड सेकंड इज यूट्रस का कैंसर। और आईसीएमआर के जो स्टैटिस्टिक्स है उनका कहना है कि 14 लाख केसेस ऑफ कैंसर 2020 में इंडिया में थे, और जो बढ़कर 16 लाख के आसपास जाने वाले हैं 2025 में। लेकिन इसमें एक गुड न्यूज भी है।
गुड न्यूज ये है कि मैंने, जैसे हम लोग इंटरनेट पे देख रहे थे, तो मैंने देखा कि जो ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर का जो इंसिडेंस है उसमें नागपुर ये काफी कम इसमें नागपुर सबसे अच्छा स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, और नागपुर में काफी कम लोगों को कैंसर का प्रॉब्लम दिखाई देता है कंपेयर टू अदर सिटीज लाइक औरंगाबाद या सिक्किम या बैंगलोर, उसमें काफी ज्यादा है और नागपुर में काफी कम है। ये एक खुशी की बात है हमारे लिए। तो जो फर्स्ट इज कैंसर ब्रेस्ट, नंबर 2 इज यूट्रस का कैंसर, और थर्ड कैंसर जो है वो ओवरी का कैंसर। ये तीनों कैंसर के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो रहता है, जिसमें हम लोग कैंसर नहीं होना चाहिए इसलिए जांच करते हैं, वो जांच करीब करीब 2 साल से ऑलमोस्ट बंद है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कोविड। सो लॉकडाउन के कारण हुआ क्या कि ये स्क्रीनिंग जो करना चाहिए, तो ये जैसे कि ये एक पेपर आया है, इसमें लिखा है कि स्क्रीनिंग में अभी गैप हो रही है। और जैसा कि अब हमको पता चला है कि अभी कोविड भगवान करे और फिर से ना आए, तो शायद कोविड धीरे धीरे हमारे लाइफ से एग्जिट कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि स्क्रीनिंग का हम लोग इसका काम बढ़ा दे। और इसीलिए आज का जो व्याख्यान है वो इसी प्रयोजन से लिया गया है कि अब हम लोगों ने आगे आकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग करना चाहिए ताकि कैंसर प्रिवेंशन पे हम लोग जोर दे सके। अभी कुछ चीजें रहती है जिसको हम लोग रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स में ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें हम कुछ बदल नहीं सकते, जैसा कि मैंने बोला कि जो हम बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करने की शक्ति हमको मिलनी चाहिए। तो देर आर सम थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज, लाइक एज फैक्टर। As the age advances, the chances of cancer are going to rise. The second thing, which is very important, which you cannot change, especially in breast cancer and ovarian cancer, is the genetic mutations and BRCA mutations which are taking place. तो किसी किसी का जेनेटिक सिस्टम जो रहता है वो ऐसा रहता है कि उनको कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसलिए आजकल एक्चुअली जेनेटिक टेस्टिंग भी होने लगी है, जिसमें आपको पता चलता है कि किसको कैंसर का होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो तुम प्रेडिक्ट भी कर सकते हो जेनेटिक टेस्टिंग से के द्वारा कि किसको इसमें चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और एक चीज है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, वो है रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। जैसे कि जल्दी पीरियड शुरू होना, या मेनोपॉज लेट आना, या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, या बच्चे एक या बच्चे नहीं होना, इन चीजों में भी ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा मायने रखती है। If there is a family history of breast cancer and ovarian cancer, then the chances of cancer are very high. और यदि कोई गठान या ब्रेस्ट में पहले कोई ट्यूमर हुआ है तो भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हाई रहते हैं। Prevention is always better than cure. So we have to do some preventive measures, and this is something which we can do. Some of the things are the factors which you can change, and these are the things which you should actually keep in mind, that something which you can do for your good health and for prevention of cancer. The first thing is the physical activity, and I think it applies for everything, not only for cancer. It is important for heart disease, it is important for cholesterol, it is important for the stroke, or it is important for heart attack, anything. So if you're doing good exercise and good physical activity, and if you're not overweight or obese, then definitely you will have less chance of getting cancer. Another thing which is important is hormone replacement therapy. Dr. Ashi madam is with us. There are many gynecologists which are with us. They know it very well that HRT or hormone replacement therapy, there was a fashion in 1990 to take HRT or hormone therapy. तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए जवान रहने चाहिए, और उसके लिए कुछ लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत ज्यादा मात्रा में लेने लगे थे, और बाद में ऐसा पता चला कि उससे भी कैंसर का प्रमाण बढ़ता है। इसलिए अभी के गाइडलाइंस ऐसी है कि हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनोपॉज में ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मत लीजिए। और 5 साल के ऊपर HRT लेना, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना बराबर अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि उसमें कैंसर की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो किसने लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, ये आप सबको डॉक्टर्स की सलाह लेके ही करना है। समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, और मैं आजकल ये आई एम टेकिंग दिस एज अ social cause, and anybody who is coming to me for consultation, I see to it, I make it a point to tell them that please, please, please marry early and have children before the age of 30. So the ideal age of marriage is 25, and you should have at least one kid before the age of 30, because there are so many reasons for that. One thing is possibility of infertility in future, and the second thing is this is the risk factor for cancer. If you have first pregnancy after 30 and if you're not breastfeeding, again, this is one thing. There was a fashion, uh, some 10-15 years back, people used to think that breastfeeding करने से हमारा प्रॉब्लम बढ़ेगा, हमारी फिगर खराब हो जाएगी, और there was a trend of not breastfeeding or avoiding breastfeeding. But you must know this point that breastfeeding is going to help you in protecting against the breast cancer. Nowadays, social drinking is becoming so common, and not only drinking, even smoking is becoming so common that social drinking and smoking are the major cause of serious problems, including breast cancer. So you should refrain yourself from drinking alcohol and smoking. Something which you can do, जो चीजें हमारे हाथ में है, जो चीजें हम कर सकते हैं, वो तो जरूर करनी चाहिए. Now, so in short, those who are having family history of breast cancer, or those who are having changes in the BRCA2 and BRCA1 genes, they are very highly susceptible for breast cancer as well as ovarian cancers. Next comes the cervical cancer. You should know that cervix cancer, or the cancer of the mouth of the uterus, is also very common in India because of the low socio-economical conditions. There are many things which are important in cervical cancer. The most important thing is the virus which is causing cancer cervix is known as human papilloma virus. And this human papilloma virus is the cause of cancer, and this can be avoided if you avoid all these things. What are the things which are important? Multiple sexual partners, having 3 or more children, uh, not maintaining hygiene, proper hygiene, smoking, and use of OC pills or birth control pills for more than 5 years are some of the reasons known to cause cervical cancer. So these are the things which you can avoid, and something which is seen in countries like India. So you can actually do this, creating awareness amongst people. When you come in contact with somebody who is not maintaining hygiene, you can talk to them regarding hygiene. If you come across somebody who is having planning for third pregnancy or fourth pregnancy, you can tell them that please do not have more than 2 children, because that can be a cause of cancer. If somebody comes to you with infection or say white discharge, then you should know that this can also be a cause of cancer cervix. नेक्स्ट इज यूट्रस का कैंसर, यानी यूट्रस के लाइनिंग का कैंसर या गर्भाशय के थैली का कैंसर. अब एक गर्भाशय के थैली का कैंसर है, ये कैंसर का एक जरूर संबंध है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से. पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये शायद आपने नाम सुना होगा. नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज ये एक ऐसी कंडीशन है जो यंग एज में होती है, जो उम्र के 15-16 साल में शुरू होती है, और वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती. और पीसीओ के पेशेंट्स में, क्लासिकल पीसीओ के जो लड़कियां रहती है, उनमें ओबेसिटी रहती है, मोटापा रहता है, उनमें हेयर ग्रोथ जाता रहती है, और उनको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते. आगे जाते जाके इन्हीं लड़कियों को बच्चे होने में प्रॉब्लम होता है, और आगे जाके इन्हीं लड़कियों को 40 साल के बाद यूट्रस का कैंसर होने की संभावना भी बढ़ती है. अब ये सब चीजें हैं, ये विशेष सर्कल है, और इस विशेष सर्कल से हमें बाहर निकालने के लिए हमको पीसीओ को काबू में रखना जरूरी है. इसके साथ साथ वेट रिडक्शन भी जरूरी है. तो मोटापा यदि होता है या पॉलिस्टिक ओवरीज होती है तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है.
फैमिली हिस्ट्री इसमें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है मोटापा या ओबेसिटी। ओबेसिटी जिनमें रहती है इनमें यूट्रस का या गर्भाशय के थैली का कैंसर ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। नेक्स्ट इज ओवेरियन कैंसर। और ओवेरियन कैंसर जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका और ब्रेस्ट कैंसर का संबंध है, एक दूसरे से है। और ब्रेस्ट कैंसर जैसा म्यूटेशन और जेनेटिक कारण इसका भी हो सकता है। यदि ओवरी में ट्यूमर्स है, जैसे कि ओवरी में सिस्ट है या ओवरी में छोटे छोटे ट्यूमर्स है या एंडोमेट्रोसिस, ये एक नाम की बीमारी रहती है जिसमें ओवरी में स्वेलिंग होता है, ऐसे लोगों में आगे जाके ओवरियन कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए हमें सोनोग्राफी बीच बीच में करते रहनी चाहिए। और अब मैं आपको आगे जाके ये बताने वाला हूँ कि हम लोग हमारे ओमेगा में इस प्रकार से प्रिवेंशन का काम भी कर रहे हैं, जो कि आपको जिसका लाभ आपको उठाना है, जिसमें सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओवरी के कैंसर का कैसा है कि ओवरियन ट्यूमर बहुत बड़ा होने तक के किसी के ध्यान में ही नहीं आता, और ये उसमें सबसे बुरी बात है, या सबसे it's a cause of worry. Because what happens that if you have a say lump in the breast, you will be able to palpate it. If you have white discharge, then you can think of having some problem in the cervix, uterus के मुंह पे. लेकिन the ovaries, they are in the abdomen and they grow, बढ़ते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। और ये एक कारण है जिस वजह से मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि कम से कम 2 साल में एक बार आप सोनोग्राफी कीजिए। उसको 2 मिनट लगते हैं, खर्चा भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इससे ओवेरियन कैंसर से आप खुद को बचा सकते हो। A stitch in time saves nine, and this is something which you all should always keep in mind whenever you are, thinking about the problems in future. So prevention is always better than cure, and 30 to 50% of cancers can be prevented by implementing preventive strategies. And if you diagnose them early, then also the prognosis is very good. So prevention and early detection are the two things where we have to focus, because once the cancer spreads, then you just cannot do anything. But if you prevent it, or even if you are not able to prevent it, but you are able to detect it in the early stage, that is fair enough, because that gives you a good chance of survival, and that is actually what we want. So you can reduce the cancer risk by not using tobacco in any form, avoiding alcohol, maintaining good body weight, eating healthy diet, which is extremely important nowadays, doing physical activity on a regular basis, and avoiding consumption of alcohol. The the things which are important is you can actually prevent cervical cancer by taking a vaccine called as HPV vaccine. Then if you avoid exposure to pollution, then also the chances of cancer are low. And reducing exposure to pollution is extremely important, and also radiation, because especially those who are working in, radiation exposure is there. That is the situation where the cancer possibility of cancer is also high. So something which you have to keep in mind. Now I'll tell you something about HPV vaccine, and this is something, ये सब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हम सबके घर में छोटी लड़कियां हैं, सबके घर में जवान लड़कियां हैं, और इन लड़कियों को आगे जाके कैंसर सर्विक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे पास इलाज है, हमारे पास उपाय है, और वो है एचपीवी वैक्सीन लेना। अभी वैक्सीन के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। 11 से 12 साल की उम्र में ये वैक्सीन लगना चाहिए। 12 साल की उम्र में ये वैक्सीन लगना चाहिए। 9 साल की उम्र से आप लोग ये वैक्सीन लगा सकते हो, और 15 साल की उम्र तक आपको सिर्फ 2 इंजेक्शन लगाने हैं। 15 के ऊपर यदि आपका एज है तो इन लड़कियों को आपको 3 डोजेस देने हैं, और 26 साल की उम्र तक आप लोग ये वैक्सीन लगा सकते हो। तो दिस इज समथिंग विच यू ऑल शुड नो, बिकॉज एवरी हाउस you have daughters, you have granddaughters, you have teenager girls, and you should know this fact that taking HPV vaccine along with rubella vaccine, rubella is one more vaccine which we give during this at this period or during this period,
Along with rubella, if you take HPV vaccine, then you are going to protect herself from cancer in future. So as I told you, you can give it up to 26 years of age. Some people they take even after 26 years of age, but it is better to take at the age of 12 to 13. So teenager is the best age group when you should take HPV vaccine. There are two types of vaccine which are available in market. Even this is a Gardasil 9 and Gardasil 4. These are the two vaccines which are available. The vaccine which contains four protection against four viruses is equally good, and it is cheaper than Gardasil 9. Gardasil 9 is something around 8 to 10,000 rupees, while Gardasil 4 is around 4,000 rupees. So you can select or you can choose, but this is also okay. And this vaccine will protect you, and the protection is very high, very high. They have done studies and they have found that it gives 90% protection. Imagine 90% protection. So good. 88% in protection against infection like warts. And this protection is long-term protection. So it is not going to give you protection for 1 or 2 years. It is going to give you protection lifelong. So you will not, the chances of getting cancer cervix at the age of 50 are also low if you take vaccine at the age of 12. So puberty or teenage is the best age when you should give HPV vaccine. You may be worried about, side effects or allergies of the vaccine, but don't worry. Everybody has taken COVID vaccine. लिया है कि नहीं लिया है? सबने लिया है. तो कोविड वैक्सीन जब लेते हैं तो अपने को मालूम है कि डोलो 650 हमारी नेशनल ड्रग बोलते हैं आजकल उसको. डोलो 650 की एक गोली खा लो, हमको अच्छा लगेगा, कुछ नहीं होता. वैसे ही एचपी वैक्सीन के भी कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे फीवर आना या रैश आना या थोड़ा सा नौशिया होना, मसल पेन होना या थोड़ा सा डिजीनेस या चक्कर आना. लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है. इसके अलावा किसी किसी को एलर्जी की रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग सीवियर एलर्जी हो सकती है. तो जिनको एलर्जी की हिस्ट्री है उनको ये वैक्सीन लेते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. अदरवाइज कोई भी वैक्सीन ले सकता है. अब नेक्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस के कैंसर का प्रिवेंशन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यदि अवेयरनेस है तो आप ये कैंसर से खुद को बचा सकते हो. और कैंसर सर्विक्स और कैंसर ब्रेस्ट, ये दो ऐसे कैंसर है जिनको स्क्रीनिंग संभव है, और जिनमें स्क्रीनिंग संभव है और स्क्रीनिंग से मैक्सिमम लोगों का कैंसर प्रिवेंशन पॉसिबल है. जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें दो चीजें है. एक है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो आपको खुद को करनी है आपके घर में, और दूसरा है मैमोग्राफी जो कि एक छोटी सी टेस्ट है जो सोनोग्राफी के द्वारा भी आजकल होती है. सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको पैप्समेयर की टेस्ट करनी है, जो हमारे यहाँ ये टेस्ट हम लोग रेगुलरली करते हैं, और कॉल्पोस्कोपी की टेस्ट करनी है जिससे आप सर्वाइकल कैंसर को भी अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन कर सकते हैं. अब मैं आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा, जो अतिशय महत्वपूर्ण जानकारी है. अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप यदि ब्रेस्ट कैंसर का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर पाओ या कर सको तो आप एक बड़ी बीमारी से खुद को बचा सकते हो. और आपको आपके आंखों का और आपके हाथों का इस्तेमाल करना है. आपको जरूरत है आपके हाथ का इस्तेमाल करने की, आंखों का इस्तेमाल करने की, और सामने आईना चाहिए, बस. दैट इज ऑल. कैसा है कि आपका ब्रेस्ट का साइज शेप आपको सबसे अच्छे से पता है, इसलिए आपको उसमें जरा भी चेंज नजर आया तो आप समझ सकते हो कि इसमें चेंज दिख रहा है. लेकिन पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये ब्रेस्ट का टेस्ट करने के पहले एंग्जाइटी मत रखो, क्योंकि कैसे कभी कभी क्या होता है कि अपने को गठान महसूस हुई तो हम डर जाते हैं, और डरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर पे को जाने के लिए अवॉइड करते हैं. तो that is very natural, but you should not do that. There should be no anxiety, because it is said that even if you find a lump in the breast or there is a swelling in the breast, in 99% of the cases it is not cancer. So don't worry, it is just a screening. So you just know that there is something, you can palpate something, you can feel something, you just inform your doctor. That's all. That is what you have to do. So it is just a screening test, and most of the time it is not a cancer. So don't worry, but just do it. So you have to do it and you must do it. You should not avoid doing that.
Now, when to do this test? You should ask your doctor how to do this test. Or you are already listening to my talk where I'm going to tell you. Or you can see videos on the YouTube and you know how to do this test. And when to do this test, usually it is done after menses. And the 7 days after menses is the best time to do this test. Okay. Now I will tell you how to do this test. Steps of the test. First thing, after taking shower, maybe stand in front of a mirror. In front of a mirror, you stand. Then you examine your breast, check the size, check the shape, check the color, and check the position of the breast and the check the nipples. After doing this, you just raise your arms, and then again you do the same examination. See the breast after raising your arms. After that, third step is put your hands over your hips and again bend forward and do the same examination, right? So first is stand, second arms like this, third arms on the hands on the hips and bend down. Fourth thing is you have to just compress the nipples and see that there is no discharge. Then you start palpating with your hand, feeling it with your hand. Just feel the breast starting from upwards to downwards, and first feel lightly and then feel firmly, see whether there is any lump or not, and then do this test again in the lying down position. That is all. You have to palpate the breast, and not only breast, you have to palpate the axilla also. So palpate the breast and the axilla. काख में भी देखना है और breast में भी देखना है. तो this is how you do. और जो हाथ है वो पहले लाइटली घुमाना है, फिर प्रेस करके घुमाना है टॉप टू बटन, फिर सेमी सर्कल में, फिर सर्कुलर इसमें. और ये जब करते हैं तो ये स्टेप्स आपको इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि कोई स्टेप छूट ना जाए. हर एक स्टेप यदि आप अच्छे से करो तो you will not miss even a single lesion. So that's the beauty of this test. So you should remember one thing, that with age or with menstruation, some changes are there in the breast. So that is normal. But when you find that there is a lump, when you find that there is something in the underarms, some lump in the underarms, or if you find that your breast is showing something like orange peel, it is called as purity orange, something like this. Or if you find that your nipples are inverted, or if you find that there is a discharge in the nipple, then or some redness on the breast, then you have to consult your doctor. That is very important. And what we do at Omega Hospital is we are actually offering all these tests to all our patients. So we do, first thing is ultrasound of the abdomen, where we see the uterus, we see the ovaries. And then next thing we do is sonography of the breast. That is called as sonomammography. Nowadays, sonomammography is very easy to do, and you can find a lump or a swelling in the breast with the help of this sonography machine. So it takes only hardly 5 minutes. And then you have to do this sonomammography in the patients where there is a history of breast cancer in the family. If you have some history of breast cancer in the family, you should do it every 2 yearly, ideally. If you have a lump in the breast, you should do it every 2 yearly. Or if you find that there is some lump on examination, you should do it. Or if there is a discharge, you should do it. But I would go a step ahead, and I would request you to get it done regularly, even if you don't have any lump or anything, because there is no harm in doing it. It is a routine test which you can do only for 2 minutes, and you are tension free. The anxiety is gone. So why not do it? So you should do it. Then we do at Omega colposcopy and pap smear, where we just see whether there is a ulcer on the mouth of the uterus, and if there is an ulcer or an infection in the mouth of the uterus, then we take the smear testing from this mouth of the uterus and send it to the laboratory to see if there is any infection. And this is a test called as pap smear test. You must have heard about this test, but see, that is the difference between the developed countries and developing countries. In UK, what they do, they send a letter to every woman, every citizen, every female citizen. They send a letter and they ask them to
come for the checkup. And if you don't go there, they will send one more letter. And if you don't go there, then they will send some volunteer and try to convince you that please come for the pap smear examination. So that is what they do in UK. Why not in India? We should do it because it is possible. And India, the problem is India is showing highest number of cases of cervical cancer. So after the age of 30 years, every 5 yearly, only once in 5 years. So it's not a big deal. It's a very small test. It takes only 5 minutes, and you have to do it every 5 yearly after the age of 30 years. That's all. So that is something which you all should do. And the last part of my talk, last 5 to 10 minutes I'll take, is about the lifestyle. And lifestyle modification is something which we all should always keep in mind because it is important not only for cancers but for everything, for total well-being, for prevention of cardiac problems, prevention of hypertension, prevention of strokes, or prevention of, for that matter, any medical disorder, diabetes. Everything has got a relation with the weight, and you should not be overweight, of course, and you should also not be underweight. So your BMI should be around 20 to 23. That is the ideal BMI. In India, BMI more than 24 is considered as abnormal, and BMI less than 19 is also considered as abnormal. So it should be around 20 to 23. That is what you should remember. And if you just look at the guidelines in our medical books, they have given guidelines of about how many hours you should do exercise. Guidelines say that for normal adult, you should have 150 minutes per week of moderate intensity physical activity. So if you are going for a walk, then 30 minutes walk per day, at least 5 days in a week, or 75 minutes per week of vigorous activity. So at least 15 minutes of vigorous activity per day is something which you should do, and you should slowly increase your physical activity. फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड्स एवरीथिंग. आजकल काफी लोग साइकिलिंग करने लग, नया शौक लोगों को लगा है जो कि अच्छा है. साइकिलिंग करते हैं काफी लोग मैराथन दौड़ते हैं. You can play some, you can engage yourself in some sports like badminton, or you can go for a swim. Now that probably the swimming pools will open soon, you can go for a swim. So you can do all the physical activities, any kind of physical activity, and it is very important to have a smart approach. So what is a smart approach? Be smart. What is smart? Smart is specific. So do physical activity which is specific, which is measurable. So try to use your smartwatch, the gadgets which are nowadays available, and have measurable रोज कितने मिनट हम वॉक किया, या आप रिकॉर्ड करो. और रिकॉर्ड ही मत करो, उसको तुम शेयर भी कर सकते हो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, और दूसरे को मोटिवेट भी कर सकते हो. अरे मैंने आज 30 मिनट्स वॉक लिया, तुमने कितना वॉक लिया? यू कैन डू दैट. अचीवेबल, समथिंग विच इज सो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, कुछ भी रिलेवेंट एंड टाइम लिमिटेड. कुछ भी सोच आज 2 घंटे जॉगिंग करूंगा, तो वो पॉसिबल है कि इट इज नॉट अचीवेबल, इट इज नॉट रिलेवेंट. सो इट शुड बी स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant, and time limited. So if you have this approach, then I am sure you will be able to maintain your weight if you are normal weight or normal BMI, and if you are overweight, then you will be able to reduce weight also. And you should do self monitoring, and I will go a step ahead and I'll tell you, please, you put your, there are so many applications. Strava is there, then Apple Watch has got that Apple Health application. You can share your physical activity with your friends so that they also get motivated, and then you can actually have a better option. क्योंकि एक्सरसाइज की कोई पिल नहीं होती, एक्सरसाइज की कोई गोली नहीं होती, आपको कोई ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइज. एंड अबाउट डाइट, आई मस्ट से दैट एक हाथ में यदि तुम्हारे एप्पल है और दूसरे हाथ में किसी ने तुमको मिठाई दे दी, तो
ये कहने के लिए ठीक है कि एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन जब हमारे हाथ में एप्पल और मिठाई आएंगे तो हम लोग तो मिठाई खाएंगे। और ये तो it is so obvious that, and it is so natural, it is so tempting that you will always prefer this over this. So you should actually plan your diet, plan your meals, and you can actually take a opinion of a dietitian, and you can practice this, that you can have a diet plan. And the problem with Indians is कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसका सोल्यूशन है, अरे कुछ खा लो, सिर दर्द हो रहा है, अरे कुछ खा लो, बुखार लग रहा है, कुछ खा लो, बाहर जाना है, अरे कुछ खा के जाओ। हमारे इंडिया में किसी भी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, बेटा कुछ खा लो, बेटा कुछ खा लो। पता नहीं ये खाना 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 करते करते हमारा वजन कब बढ़ जाता है हमें भी पता नहीं चलता। और फिर हमारी मदर रहती है, हमारी मदर इन लॉ रहती है, फिर हमारे फेस्टिवल्स रहते हैं, गणेश फेस्टिवल से शुरू होते हैं तो महालक्ष्मी, दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, पोंगल, छठ पूजा, and so many festivals, and then comes great Indian weddings, great fat Indian weddings. So this list goes on and on and on. और ये confusion ही confusion है, इसका कोई solution पता नहीं। I really don't know, but then this is what is happening. I have noticed that since the festivals and the social activities they have restarted again, you have started going to receptions, wedding celebrations, and tend you tend to eat more, and ultimately you gain weight. So I always tell my patients that even if you don't do any exercise, you can just do a simple exercise, which is going to help you in weight reduction and weight control. You just move your neck to the right and then to the left. But the timing of moving this neck is important. Whenever somebody offers you mithai, you just move your neck like this. And this is a very simple exercise, but this exercise will help you in achieving your goal. अब कुछ लोग बोलते हैं अरे हम लोग तो घर में ही खाते हैं, हम लोग बाहर खाते नहीं है। लेकिन घर का खाना मतलब, घर में खाना मतलब घर में जोमेटो का खाना नहीं, घर का खाना। I think that is one more thing which is happening nowadays. So it is becoming so easy to order food, dial for food is becoming so easy that this is something which ultimately leads to weight gain. And then, as I told you, all cancers, I think personally that pollution is the biggest culprit. Pollution is the kingpin. Pollution is the major cause of all the cancers, which is on the rise day by day. So go green, go organic, use of mask, something which अभी आदत लगी है, तो मुझे लगता है ये आदत छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 8-10 साल पहले या 5 साल पहले एयरपोर्ट पे मुझे कुछ जापानीज लोग, हमेशा ऐसा दिखता है कि जापानीज लोग, काफी जापानीज लोग हमेशा मास्क पहन के रहते हैं। फिर मुझे बाद में पता चला कि जापान में ये लोगों को आदत है कि जहां तक हो सके मास्क पहन के रहा करो, और उससे जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं होते, और आपको खुद को भी प्रोटेक्शन मिलता है और लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलता है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया. We have already started using mask, so why not continue using mask whenever possible, especially जब भीड़ वाले एरिया में हम लोग जाते हैं, जब मूवीज में जाते हैं, तब why not use mask to protect ourselves from pollution. आई थिंक पहले मैंने सोचा था कि मराठी में शायद मुझे टॉक देना है, इसलिए मैंने ये लिखा है, कोणाला सांगू माझी व्यथा. मेरे प्रॉब्लम्स मैं किसको बताऊं. मेरा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे को अभी आजकल आ रहा है, वो है लोग ये सब करने की इच्छा ही नहीं रखते. दे आर ऑलवेज इन डिनायल मोड. ऑलवेज पीपल थिंक किसी को कैंसर होगा, हुआ होगा, मुझे नहीं होने वाला है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन टू मी.
जब होता है तब लगता है वाई मी, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक लोग तो किसी को वो होगा, लेकिन मुझे नहीं होगा। दूसरी बात मैंने देखी है कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि दे आर ट्राइंग टू अवॉइड, एंड दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। किसी ने बोला चलो तुम्हारा ब्रेस्ट का सोनोग्राफी करके आते, अरे आज नहीं कल देखेंगे, उद्या पाहू, आज मला वेळ नाही है। दिस इज सो कॉमन एंड इट इज अ ह्यूमन नेचर, you we try to avoid going to the doctor. Then some people think that why should I spend money, I don't have any problem, why should I spend money, डॉक्टर को सोनोग्राफी के पैसे देने की क्या जरूरत है। प्रॉब्लम और एक है, हमारे सोसाइटी में women are the last priority. So पहले तो घर के बाकी लोगों की तबीयत अच्छी रहनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं, गांधी जी ने कहा था कि यदि घर की महिला की हेल्थ अच्छी है तो फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी, और फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी तो पूरे देश की हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन ये हम लोग नहीं फॉलो करते। द इंडियन विमेन हैव दिस टेंडेंसी की अंगावर दुखणं काढणं ज्याला म्हणतात मराठीमध्ये, ये बहुत कॉमन है अपने लोगों में। सो आई ट्राइड टू कन्विंस पीपल, इनफैक्ट एक महीने से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को कन्विंस करो कि हमारे यहाँ आओ। हमारे यहाँ जिनकी डिलीवरीज होती है उनके मदर इन लॉ को, उनके मदर्स को मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पेशेंट एडमिट है, आप 1-2 मिनट के लिए मेरे साथ आइए, सोनोग्राफी कर लीजिए, आपको जितना पैसा देना है उतना दीजिए, मैं मेरे को पैसा कमाना नहीं है इसमें से। लेकिन वो बोलते कि अरे अभी तो मेरे को टाइम नहीं है, अगली बार जब आऊंगी तो मैं कर लूंगी, एंड दे जस्ट अवॉइड इट। सो दिस इज अ वेरी सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये छोटे छोटे जो टॉक्स जो आज मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे टॉक से लोगों में ऐसा विश्वास आएगा कि ये करना जरूरी है, लोग आएंगे और जुड़ेंगे। मैं अकेला ही चला था जनीबे मंजिल की ओर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम लोगों को पेशेंट्स, लड़कियां और औरतें खुद आकर बोलेंगी कि हमारी हमारी जांच कीजिए, और मैं वो दिन की राह देख रहा हूँ, कब ये दिन आएगा। और मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ने से जरूर आएगा। एक रूरल एरिया में निरामयी करके हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें हम लोग हर 2 महीने में एक बार कॉल्पोस्कोपी और ब्रेस्ट सोनोग्राफी और मैमोग्राफी की जांच छोटे गांव में जाकर करते हैं। और ये जांच, ये हम प्रोजेक्ट हमने हमारे हॉस्पिटल को इस साल 25 साल हुए, इसलिए हमने ये जांच शुरू की है, और इसमें हमारे ऑलरेडी जनवरी से अभी तक 2 कैंप्स हो चुके हैं, और हर 2 महीने में हम लोग एक कैंप करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं रूरल एरिया के लिए, जिसका नाम है निरामयी योजना। स्वस्थ नारी यही है मनोकामना हमारी, ये हमारी टैगलाइन है। और दूसरा है स्मार्ट कार्ड। और आज मैं जो आज हमारा प्रोग्राम लेने का जो मेन एम था, सुप्रिया मैडम से मैंने बात की, तो मेन एम हमारा ये था कि 8 मार्च को हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और इस प्रोग्राम को आप सबको आना है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ भाषणबाजी नहीं करने वाले, हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी रखने वाले हैं। और आप सबको मैं सादर निमंत्रण देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। 8 मार्च स्मार्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। हमारा कंसेप्ट है फिट एट 40 स्मार्ट एट 60। तो आप 40 में फिट रहिए और 60 में भी स्मार्ट रहिए, और इसलिए हमने ये स्मार्ट कार्ड बनाए हैं जो हम लोग उस दिन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इस स्मार्ट कार्ड में हम लोग हर 2 साल में हर महिला की 4 टेस्ट, जिसका की खर्चा 10,000 के आसपास है, सिर्फ 2,500 में करके देने वाले हैं। उसमें एक टेस्ट है सोनोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट, सोनोमैमोग्राफी, दूसरा है सोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन, तीसरा है थर्मल मैमोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट, और चौथा है कॉल्पोस्कोपी की जांच। और ये चारों जांच हम लोग स्मार्ट कार्ड जिनके पास है उनके कम से कम चार्जेस लेके करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड on our silver jubilee celebrations. So this is a silver jubilee year for Omega, and this is a gift from my side. So I want you to please take the advantage, इस योजना का आप जरूर लाभ उठाइए, and be smart. Fit at 40 and smart at 60 is something which is my dream,
and we together can do this. So I would say one thing, that please don't quit, but just do it, because there is, and I am sure that there is always a light at the end of the tunnel, and we will be able, together we will be able to achieve healthy India, and we will be able to reduce the burden of cancer from the society of India, because the problem with India is we are number one in many cancers, in many problems like diabetes, cardiac problems, cancers. We are number one. We don't want diabetes, we are number one. We don't want to be number one in wrong things. We have to be number one in good things. So together we can achieve this target if we see to it that we do proper screening and early detection and prevention of cancer. I thank you all. शुक्रिया तहे दिल से आप सब लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड किया, और आप सब हमारे से जुड़े, और आपने यहाँ आकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आप सबको निमंत्रित करता हूँ 8 मार्च के प्रोग्राम के लिए। उसके डिटेल्स सुप्रिया मैडम को मैं जल्दी देने वाला हूँ, तो सुप्रिया आपके पास तक वो डिटेल्स पहुँचाएंगी, और मैं आप सबका इंतजार करूँगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to interact with you all, and it was a great pleasure to be with you. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आमच्या हमारे क्लब की तरफ से मैं लक्ष्मी को इनवाइट करते हूँ वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए। लक्ष्मी, हेलो लक्ष्मी। Am I audible? Yeah, Lakshmi, are you there? Yes, I'm there. Yeah, please. So, Dr. Chaitanya Shembekar, I really thank you from the bottom of my heart on behalf of all our Innerville Club members, that you took time from your busy schedule and give some very powerful and valuable insights for all of us. And just to take a quick recap of what you have told today is how awareness is more important than getting panic, how screening can help us in preventing cancer, especially the BSC test or a self breast test, HPV vaccination for girls, lifestyle modification, and smart activity approach. I would also like to congratulate your team for a noble project like Niramay and a smart card activity, and we are really looking forward for it. And I hope you will keep continuing your guidance to all of us in future also. Big thanks to you once again. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. I over this program. Hello. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. भेटू हम पुन्हा आपण.